Hello, my dear students. How are you? Hope you all are fine and fit staying at home. Children, today, on behalf of Jetkin International School Pusad, I welcome you all in the virtual class. Children, today I am going to teach you Social Study chapter number 5, and the name of the chapter is Soil Story. And in that, I'm going to teach you about formation of soil. Isn't it's interesting, children? Yes, it is. It is. So let's start our chapter. Yes, children. So let's see. What is this, children? Can you observe and tell me? Yes, this is soil. So we know that soil is essential for the growth of plants, children. And there are so many uses of soil. As you know that the roots of a plant absorb nutrients from the soil. Throwing plastic bags on the land causes soil pollution also. We should plant more trees, children, to stop soil pollution. So as we know that the uses of soils are so many, okay, and you know that the concept of soil pollution is also important. Okay, so how the different ways to prevent soil pollution is also important. But before all these things, we want to first know about the formation of soil. So today in this video, we are going to discuss about that only. For that, I'm going to teach you a very interesting story of soil, how the soil form. Okay, so let's start. See, children, if you are having your book, page number 49, please open it and see whatever I am reading. Understand it. Okay. Take a handful of soil from the soil school garden and feel its texture and color. Note your observation and discuss with your friend. Yes, children, you can do this also at your home. You can go to your garden or nearby place where you can see soil. Take a handful of soil in your hand and feel the texture. Touch it and feel the texture, the color. Texture means whether it is rough, whether it is soft. Okay, that is the texture. See the color, whether it is black, whether it is red, and whatever you observe, write that observation, note that in your notebook. Okay, children, and you can also discuss with your friends and your teacher also. So let's start. The topmost layer of the earth crust is known as soil. See, children, what do you mean by soil? If you will see here, the topmost layer of the earth crust is known as soil, children. If you will see this yes, children, if you will see this, children, the topmost layer of the earth's crust. Here, what is the meaning of crust? It is the outer layer of the earth's surface. Yes, children, as you can see in the picture, this is the outer layer of the earth, topmost layer you can see, or the outer layer of the earth's surface. This is called crust. Okay, children, so the topmost layer of the earth crust is known as soil. So the topmost layer, it is known as the soil. See, you can see the picture also. Yes, so it is the topmost layer. You can see the arrow, and this layer is called the soil. Soil is made up of minerals, clay, sand. Okay, children, so soil is made up of minerals. Now, children, first of all, what do you mean by minerals? You can see here, children, see the picture. Yes, they are the useful solid chemicals substance that occur naturally. They occur naturally. We can find out these minerals from the in the earth only. Okay, they are solid chemical substance and they occur naturally. We find it naturally in the earth. Understood, children? If we will see this, yes, they if you will see, they are not only made up of clay, but they are also made up of, if you will see the picture, you will understand. Yes, this is called clay. See, children, you know clay you are using for making toys also, and also for pre-primary children we are using clay to teach them. Yes, clay is also used in building materials. We know all these things. Okay, so these are clay. So see, soil is not only made up of mineral, it is also made up of if you will see, yes, it is made up of clay, sand. You can see here, yes, pebbles. If you will see, children, a pebble, this is called
Pebbles, yes, children. And if you will see again, this is water. Air also, air we can't see, but we can feel, children. And also from the remains of dead and decaying plants and animals. See, decaying plants and animal. See, the decayed of plants. Yes, you can see from this and also from the animal. See, when the animal died, they decay. If you will see, they are called decay animals. Understood, children? So if you will see this, so we can say, so soil is made up of, yes, soil is made up of, you can say minerals, you can say clay, sand, pebbles, air, water, and remains of dead animals and plants. So millions of years ago, the earth was covered by a huge pieces of hard rocks, children. See the picture, you will understand. See the hard rock, children. Yes, millions of years ago, what happened, children? The earth was covered by huge pieces of hard rock. So our earth is covered by these hard rocks. See, you can see for in the picture, for many years, children, the sun heated the rocks. So these rocks are heated, okay, while the rain, and again if you will see here, the rain, rain cooled them. See, water everywhere around these rocks, okay. So first, many years the sun heated these rocks, and then the rain cooled them, children. Then we are having strong winds wore out of this rock. See, you can see this rock. Yes, strong wind, when it passes from this, they wore out these rocks. So इसमें का आधा हिस्सा अगर आप देखोगे तो दिख नहीं रहा है आपको, या आप अगर देखोगे ये रॉक को, तो इसमें आपको बीच बीच में लाइंस दिखाई दे रही है, क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट. सो ये किसके कारण होता है? सबसे पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हुआ, जो रॉक थे वो पहले सन के हीट से तपने लगे, और उसके बाद बारिश ने उसे कूल कर दिया, और फिर हमने देखा कि विंड विंड ने उसको उसका कुछ हिस्सा अपने साथ वो उसको हवा में बहा के लेके चले गए. व्हेन द विंड ब्लोज, वी नो दैट मेनी स्मॉल पार्टिकल्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये ऐसा हुआ. तो ड्यू टू कांस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग, चिल्ड्रन, सी बार बार वो गर्म हो रहा है रॉक, okay, because the rock, this hard rock, this is covered, most of the part of hard rock cover the earth, cover the earth, we can say, okay. So due to constant heating and cooling by the sun and rain, बार बार वो गर्म हो रहा है सूर्य की किरणों से, एंड रेन, बारिश के कारण वो ठंडा भी हो रहा है, कूल भी हो रहा है, एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड दीज रॉक डेवलप क्रैक्स. और विंड के कारण क्या हो रहा है, इस रॉक्स में, जैसे हमने पिक्चर में देखा, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं. सो ग्रेजुअली दीज क्रैक्स बिकम लार्जर, और धीरे धीरे क्या होने लगा, ये क्रैक्स बहुत बड़े बड़े होने लग गए. फाइनली द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, और उसके कारण क्या हुआ, रॉक्स फट से छोटे छोटे पीसेस में, उसके अलग अलग पीसेस हो गए. ये देखो, अगर आप देखोगे तो हमने देखा पहले पहले ये सन में हीट हुआ, फिर वाटर रेन ने उसको कूल किया, और फिर विंड ने उसको उसमें क्रैक्स ला दिए, और जिसके कारण जैसे जैसे वो क्रैक्स ग्रेजुअली लार्ज होने लग गए, ये जो आप रॉक्स देख रहे हो, ये स्मॉल पीसेस में ये ब्रोक हो गए. दे ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस. अंडरस्टूड, चिल्ड्रन? एंड देन, चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड, विंड एंड वाटर कैरीड दी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक. वापस से विंड और वाटर ने ये छोटे छोटे जो पीसेस अभी आपने देखे, ये देखो, ये जो है, ये विंड और वाटर ने क्या किए, ये छोटे छोटे पीसेस रॉक के ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लेके चले गए, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द स्मॉल पीसेस रब अगेंस्ट ईच अदर. और जब ये विंड और वाटर के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो इसमें ये क्या होने लगे, छोटे छोटे पीसेस एक दूसरे से रब होने लगे. रब में यानी आपको समझता है, जैसे कोई दो चीज़ जब एक साथ रब होती है, ओके, घिसती है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ओके. सो वो वापस से घिस घिस के क्या हो जाती है, वो चीज़ टूट जाती है वापस से. सो फर्दर दे ब्रोक इनटू टाइनी पीसेस. तो ये जो छोटे छोटे पीसेस थे रॉक्स के, वो वापस से एक दूसरे के साथ रब होने के कारण दे ब्रोक इनटू टाइनी पीसेस, ये और छोटे छोटे होने लग गए. दीज टाइनी पीसेस लेटर मिक्स विद द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे मैंने आपको दिखाया, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके साथ वो मिक्स होने लगे. क्या, ये छोटे छोटे टाइनी टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स.
and the entire process of soil formation took many years and it was continuous. See children, soil ऐसे नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि soil कैसे बनता है. yes, पहले ये जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, इनको ये पहले हीट, सन से हीट होते हैं, सन इनको हीट देता है, फिर ये कूल होते हैं वाटर से, रेन वाटर से. उसके बाद विंड से इनमें क्रैक्स आ जाते हैं और उसके कारण वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं. एंड देन व्हाट हैपन, आई टोल्ड यू, दे दे मिक्सेस, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वापस से इनमें वापस से दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड अगेन दे ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ये वापस से मिक्स हो जाते हैं. और ये मिक्स किससे हो जाते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल से. और ये जो पूरा प्रोसेस है सॉइल फॉर्म, और इससे सॉइल बनता है. Isn't it interesting? So this entire process of soil formation, children, took many years. ये एक झटके में नहीं हो जाता कि बाबा कल हीट मिल गया, वापस से उसको पानी मिल गया एंड देन उसके छोटे टुकड़े हो गए. नहीं, इट टेक so many years, children, and it was continuous. ये हो रहा है, अभी भी चल रहा है. Okay, hence soil form the topmost layer of the earth crust containing minerals, clay, sand, pebbles, water, air, and the remains of dead and decaying plants and animals. So you should know that soil is form the topmost layer of the earth crust. और उसमें क्या क्या होता है topmost earth crust में? Minerals, clay, sand, pebbles, water, air, and the remaining parts of dead and decaying plants and animals. So like this, the soil forms. So this is the story of formation of soil. Hope you all understood it. Enjoy the story, and if you have any doubt, if you not understood anything, ask me in your interactive session. Thank you, children.